Hello everyone. So basically this is the continuation series of K-map in the Boolean. In this we are going to discuss some questions related to the K-map. Am I audible to everyone? Okay, Yes, sir. fine. Just a moment. One second. Okay. So before starting the actual questions of the K-map, I just want to discuss one thing. Draw the logic gate using the NAND gate only and assume that variable and their complement. One second. Actually the peoples are joining. They got the message little late. You have to be very active in the groups. Okay. 1 minute. Okay, no, it's fine. Please, we have to wait for 1 minute only. Actually, the students are joining. Otherwise, they will miss the important part of the starting. Only for 1 minute. Okay. So in this class, actually, the CBSE is also joining. And they must have the knowledge of the K-map, Carnot map. So just for revision point of view, in the 2 or 3 lines, K-map is basically used to reduce the Boolean expressions. If we reduce the Boolean expression, then the less gate will be involved in the expression. So हमारा objective होता है expression को reduce करना. So there are the 2 ways in the Boolean to reduce the expression. The number 1 is K-map. The number 2 is Boolean law. Either we can apply the Boolean law to reduce the expression, or we can use the K-map. Okay. NAND, if we talk about the NAND gate is a universal gate. What is the meaning of universal gate? We can construct or we can draw any gate with the help of NAND gate. Okay. So if some expression is given, suppose like this, and the question it is mentioned that draw the logic gate of this expression by the NAND gate. So it is possible, no problem, we can. Because NAND is a universal gate, any gate can be drawn with the help of NAND gate. So my first question is that draw the logic gate using the NAND gate only and assume that variable and their complement, assume that variable and their complement are available as input. So what exactly the meaning of this line? इस लाइन का मतलब ये है कि लॉजिक गेट बनाते टाइम एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको नॉट गेट यूज नहीं करना है. ओके, नॉट गेट के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं. आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपको नॉट गेट यूज नहीं करना है. और जितना भी आपको गेट में, जितने भी एक्सप्रेशन में आपको गेट्स यूज करना है, यू कैन ओनली यूज अ सिंगल गेट दैट इज कॉल्ड अ NAND गेट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसे बनेगी मैं आपको बनाकर दिखाता हूं. जस्ट अ मोमेंट. ओके, सी, first of all I am just discussing this expression. So a bar b bar, so we cannot use the NOT gate due to this line. Assume that variable and their complement are available as input. If you have any problem or confusion, you can interact with me by the chat. The chat option is there in the Zoom application. I will immediately respond to you, respond your query. Okay, a bar b bar. So a bar we can directly pass, and after that b bar. So b bar we have to directly pass. After that, in between the a bar and b bar, no sign is there. That means the AND gate is there. तो AND gate हमें use नहीं करना है, हमें सिर्फ NAND gates use करना है. तो we have to draw a NAND gate over here. This is basically called the NAND gate. Okay. If your Boolean revision is not there, अगर आप Boolean revise नहीं है, तो हो सकता है थोड़ी problem आए. But for the revision, I will provide some basic sessions also. Okay. So a b bar. So a and b bar. So we have to pass the complement over here. Then these
two lines will be joined A dot B bar. So dot means again you have to use the NAND gate. 1 minute. Okay, fine. So according to this quotient, we will get A bar and B bar. 1 second. And in this quotient, we will get A, B bar. All right. Now you can see that both the components and its parts are joining with the plus operator. So these two lines further will be connected by another NAND gate. That's it. No need to do anything else. This is the solution of the first expression. Understand? Actually, these concepts will be used in the next upcoming lectures. Okay, so that's why I'm just solving this. So this is the expression constructed by NAND gate only. NAND, 1 second, maybe some, 1 minute. I will definitely interact with you, just a moment. So basically NAND gate इस तरह से construct होता है. Just and circle. And not are combining together and making the NAND gate. So what will be the output? A, B, whole bar. This is the output of the NAND gate. All right. This is clear to everyone? Please respond. So I will understand. किसी को कोई problem? Yes, sir. Okay. No, sir. Yes, sir. What about the CBSE student? Please respond. सर NAND से प्लस कैसे ऐड हो गए एंड पे? We have basically discussed NAND is a universal gate. NAND से प्लस ही नहीं, NAND से हम AND, NOT और NAND itself nor हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं. Anything can be done with the NAND. यहां देखो A और B को जब हमने NAND गेट से पास करा तो I am getting the A bar. This is the basic functionality of the NAND gate. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको इस एक्सप्रेशन को पूरा करने के लिए सिर्फ आपको NAND गेट यूज करना है. Using NAND gate only. So we cannot use any other gate. अब देखो, ध्यान से देखना. I am just telling you one proof. A bar, B bar and AB bar. This is AB bar. जब इस NAND से पास होगा तो यहां पर क्या आउटपुट आएगा? 1 second. 1 minute. A bar, B bar. This is very important proof I am going to do. A bar, B bar and dot due to the NAND, and here A, B bar, and the whole bar will be there due to this NAND gate. Are you agree with this expression? ये expression हमें receive होगी due to NAND gate, क्योंकि NAND gate AB whole bar provide करता है. तो A की जगह पर ये है और B की जगह पर ये है, and these two inputs are passing in the NAND gate, so I will receive this much. Especially I am explaining this for Arslan because he has asked the question. 1 minute. You must be remember about the De Morgan law. I have basically uploaded one lecture related to the law. If you have time, so आप please उसको watch करिएगा. A bar, 1 minute. B bar, whole bar, and this dot will be converted into plus because we are applying the De Morgan law. And this will be the bar. Understand? Do you understand this thing? Yes, sir. Sum of product. 1 second.
receiving and A B bar. Just a moment. Okay, 1 second. 1 second. Okay, just a moment, please. I just want to discuss one thing that this, look at this. The output of this section, A bar, B bar is passing. But after the NAND gate, it will not receive A bar, B bar. A bar, B bar, the whole complement will be there. Understand? Because we are passing by the NAND gate. Okay, this thing I've missed actually, my side. So A, B bar, I'm passing in the NAND gate. So we will receive A, B bar, whole bar. Understand? Please. The whole bar will be due to the NAND gate. NAND gate की वजह से यहाँ पर whole bar जरूर आएगा. That's why यहाँ पर आंसर थोड़ा सा wrong हो रहा है. Just a moment. 1 second, please. Okay, 1 second. See, so when the A bar, B bar, whole bar and A, B bar, whole bar will be passed in this section, then we will receive A bar, B bar, whole bar dot A. I will explain again, no problem. Please just cooperate with me. And the whole bar will be there. Understand? ये expression हमको receive होगी. Okay, 1 minute. Just a moment, please. I just want to explain the same thing again. 1 minute, 1 minute. Okay, maybe some people get confused. Okay, so actually A bar, B bar is passing in the NAND gate. So we will receive A bar, B bar, whole bar. NAND gate हमेशा whole bar provide करता है. यहां पर A B बार हम पास कर रहे हैं NAND गेट से, तो A B बार whole bar will be there. Understand? Now these two components are passing in again the NAND gate. So what expression we will receive? A bar, B bar, whole bar. 1 minute. And dot A, B bar, whole bar and one whole bar due to this gate. Understand? Now I will apply the De Morgan law. So अगर हम अब De Morgan law apply करेंगे, 1 second please. A bar, B bar and double bar will be there because one bar is already, और ये जो बड़ी वाली bar है ये split होकर इस पर आएगी and the plus sign will be there. And after that, 1 second, 2 bars will be there. Now bar to bar will be cancelled due to the involution law. You know that. 1 second, I am just A double bar is equal to A due to involution law. If any variable or any expression is getting the continuously 2 bars, then both the bar will be cancelled out and you will get the A. So here the bar to bar will be cancelled and you will get A bar, B bar plus A, B bar. Now you have to observe one very important thing, that we have received the same expression which is given in the question. Hope you understand? Hope you understand? Please respond. Yes, sir. Yes, sir. Okay, actually it was a little bit mistake I have written in a very fast manner. The bar was missing over here. That's why. Okay, no problem. That's absolutely fine. I rechecked my calculation. Okay, so this is basically the answer of the first question. Arslan, are you there? Yes, sir. Why problem हो रही थी वो जो So बार after basically after the simplification, you are getting the same expression. In the same manner, you can construct the another expression also. Okay, so I am just drawing the second expression. Okay, एक expression और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग K-map के question पर immediately shift हो जाएंगे. Okay, so I am just erasing this part. Okay, 1 minute. I am just a moment. Screen. Okay, I'm sending the print screen. 1 minute. मैं ये print screen आपको भेज रहा हूँ ग्रुप पे.
for your reference. Okay. Okay, clearing all the drawing. Okay, so what about the next expression? A B bar C plus A B C. इस एक्सप्रेशन को भी हमें NAND गेट से बनाना है एंड एज्यूम दैट वेरिएबल एंड देयर कॉम्प्लीमेंट आर अवेलेबल एज इनपुट. इसका मतलब नॉट गेट हमें यूज नहीं करना है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. 1 मिनट. ए बी बार, अगर नॉट गेट नहीं यूज करना है तो बी बार को हम डायरेक्टली पास कर सकते हैं. अब आप थोड़ा और इजीली समझ लेंगे. और इन तीनों को हमें NAND गेट में पास करना है. तो जब हम NAND गेट से पास करेंगे तो what output will receive? Now we have to be careful. Okay, so A B bar and C. A B bar C is passing, but the whole bar will also there because due to the NAND gate. NAND gate से whole bar जरूर आता है. Okay, 1 minute. Just a moment. Just a moment, please. Just. Okay. Now what about ABC? तो ABC के लिए हम एक अलग सेक्शन ले लेते हैं. A, B, C, and these ABC will be passed in the NAND gate. And after that, we will receive A, B, C whole complement due to NAND gate. Okay, so this portion is prepared and this portion is prepared. Now we are going to join these portions. Just a moment. Combining together by the another NAND gate. And finally, what you will receive in this point. Okay, 1 minute. I'm just writing here. A, B bar, C. This is my first input. And dot A, B, C. This is my second input. And due to this NAND gate, the whole bar will be there. Okay, fine. So this is basically the expression which we will receive after the last NAND gate. Now after that, again we have to apply the De Morgan law. So De Morgan law is nothing but AB whole bar is equal to A bar plus B bar. Understand? So if we will apply the De Morgan law on this section, so we will receive A B bar C double bar. Why we are getting the double bar? Because one bar is already there and the second bar will be occur due to splitting, and plus sign is, and here A B C double bar. All right. Now bar to bar can be cancelled due to involution law we have discussed just. So the final expression will be A B bar C and plus A B C. Understand? So bar to bar will be cancelled. Now you can compare this expression with my second expression. All right. So this portion is completed. Please go through, okay, this example. Okay. Now we can discuss the K-map. Okay. Please respond anyone if you have any problem. I'm waiting. Please tell me. Should I explain anything? इसमें कोई पॉइंट आपकी समझ में ना आया हो तो बताइए, हम उसको दोबारा फिर एक्सप्लेन कर दें. और अगर आ गया है तो दैट्स वेरी गुड. Can we move to the next level? Yes, Yes, sir.
Okay, fine. So just a moment. Okay. So basically, we are going to continue the K-map. 1 minute. Okay. So in the K-map, we have already shared some questions. Okay, just a moment. Excuse me, sir. Yes, yes. सर वो ये के मैप का पीओएस एक्सप्रेशन सॉल्व करने का बता दिएगा सर. अभी SOP चल रहा है. Okay. अच्छा सर. After 2-3 sessions, we will start the POS. Okay. Okay, हम POS स्टार्ट करेंगे. अभी हमारा SOP चल रहा है इस क्लास में. Okay. 1 minute. So this question I am going to take 4 variable. Okay. Fourth question. Reduce the FABCD is equal to sigma M 0 to 7, 8, 10 and 15. This questions I am going to discuss. I think this question we have already discussed in the last class. Perhaps. Just I want to take the same question again. Okay. Or after that we will discuss this question, the question number 5. Okay. So I just start by the question number. 1 minute. Just write down this question first of all. Okay. 1 minute. I'm just want to frame another question. Okay. This question number 4, we have already discussed in the last class. So I just want to discuss another question. Okay. This is my another question. FABCD is equal to sigma 0, 1, 4, 5, 15, 14, 11, 10. Okay. I will discuss this question. Okay. In the K-map. So this is basically sigma indicates the sum of product. Sigma indicates the sum of product. Okay. So for the sum of product 4 variable, we have to draw the K-map structure. So I have already taken a मैंने एक template already create कर रखा है. Just we will change this numbers only. 1 minute. Just copying. 1 second, please. Okay. I'm just minimizing this. Okay. So this is basically my template I have already created for the K-map. Okay, see. This is the 4 variable K-map structure. Only we have to change these numbers. 1 second. Just a moment. If you have any problem, please let me know. Okay. Now this question is visible to everyone. Okay. I'm going to solve this question basically. Okay. This is the SOP questions and draw the logic gate diagram. Assume that variable and their complement are available as input. That we will discuss a little bit later. Okay. First of all, we should concentrate on the question. So basically, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद मे बी के फर्स्ट टाइम के मैप की वीडियो वॉच कर रहे हो, तो उनके लिए ये जो क्वेश्चन में ये जो नंबर्स दिए गए हैं, these are the basically positions. इसमें एक चीज अभी मिसिंग है, इन सेल्स के नंबर. तो इन सेल्स के नंबर हम किस तरह से लिखेंगे मैं आपको बताता हूं. 1 मिनट. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीरो से. 0, 1 and the last 2 number we have to reverse. This is basically the concept and standard जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. 0, 1, 2, 3, then 4, 5, 6 and 7, and after that we have to come in the last row.
8, 9, 10, 11। ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा स्लो चलती हैं लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आता है। 8, 9, 10, 11, दिस इज 12, 13 and 14. These numbers are not going to be changed in the 4 variable K-map structure. उसमें सेम रहेंगे। ओके, ये नंबर कैसे आते हैं? बिहाइंड वेरी लॉन्ग स्टोरी। ओके, आप सब जानते भी हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से आते हैं। अगर हम इन नंबर्स को इन नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द बाइनरी कोड्स, एंड आफ्टर दैट दिस बाइनरी कोड्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द डेसिमल, देन वी विल रिसीव दिस नंबर्स। ओके, सो अभी ये जो हमको नंबर दिए गए हैं इन पोजीशंस पर, दीज आर बेसिकली द पोजीशन सेल नंबर्स, इन पर हमको 1 प्लॉट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पे, एंड आफ्टर दैट 1, देन 4, देन 5, ओके ओके, एंड आफ्टर दैट 0, 1, 4, 5 is done. 15, 14, 11. So this is 15, this is 14, this is 11, and this is 10. Now after that we have to check, we have to observe कि इसमें ऑक्टेट, कॉर्ड और पेयर की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऑक्टेट का मतलब होता है 8 ones. 8 ones are there, but they are not in a sequence कि हम ऑक्टेट बना लें। तो ऑक्टेट की पॉसिबिलिटी तो यहां पर नहीं है। नाउ द सेकेंड लेवल इज दैट द कॉर्ड, कॉर्ड की पॉसिबिलिटी यहां पर है। सो जस्ट अ मोमेंट, सो वी कैन ड्रॉ द कॉर्ड। तो कॉर्ड का मतलब होता है कि 4 ones को आप एक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरिया में इनक्लोज कर लें। सो दिस इज माई फर्स्ट कॉर्ड and this is my second chord. Understand? After making the chord, you have to write down the reduced expression. Okay, fine. So I'm just going to write the reduced expression here. Second. 1 minute. Just a moment. Okay. Chord 1. अब इसमें से कॉर्ड 1 हमने कौन सा एज्यूम करा है, वो हम सेल नंबर से, 1 second प्लीज, जस्ट आई जस्ट वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट लिटिल बिट। ओके, 1 minute. सो कॉर्ड 1 हमारा बेसिकली ये है। तो इस कॉर्ड को वहां पर इंडिकेट करने के लिए हमको इस कॉर्ड के सारे सेल नंबर्स लिखने होंगे, 0, 1, 4 and 5. 1 minute. 0, 1, 4, 5. Understand? Equal to. Now we have to write down the reduced expression. तो इस कॉर्ड के लिए, if we talk about this chord, तो इस कॉर्ड के लिए बेसिकली कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व है? ये वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इस कॉर्ड के लिए। और अगर हम इस कॉर्ड को अपर पोर्शन में देखें तो these are the variable which is basically involved in this chord. 1 second. So अब after marking the involved variable, now we will check the common. So इसमें अगर हम कॉमन देखें तो a bar we are getting the common, और इसमें अगर हम कॉमन देखें तो c bar is getting the common. So 1 minute. a bar and c bar is the common term. Understand? Common term of the first chord. Now what about the second chord? Second chord हमारा ये है, तो उसके लिए हम यहां पर लिखते हैं, 1 minute. Chord 2 हम कौन सा लेकर चल रहे हैं? जिन सेल नंबर्स की वैल्यू 15, 14, 11 and 10 है। तो 15, 14, 11, 10. Okay. Fine. Those students who have not joined this session, no problems. This session is basically recorded. So recording हम आपसे शेयर करेंगे, okay, क्लास ओवर होने के बाद, no problem. So अभी अगर हम इस कॉर्ड की बात करें तो what are the common? जिन लोगों ने पहले किया है उनको थोड़ा रिवाइज हो रहा होगा। 1 minute. Okay. इस कॉर्ड के लिए ये वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, और अगर अपर पोर्शन की बात करें तो दीज आर द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड।
इनमें इनमें अगर हम कॉमन देखें तो a is the common. Only we have to write down the common terms as a reduced expression. Okay. अब इस पोर्शन में अगर हम कॉमन देखें तो we are getting c as a common. Okay. So a bar c bar is the reduced term of the first chord and ac is the reduced term of second chord. Now we have to write down the final reduced expression. One second. A bar C bar plus AC. This is basically the reduced expression. Okay, fine. अब हम लास्ट सेक्शन इसका डिस्कस करते हैं. लास्ट सेक्शन ये होता है कि रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन का हमको गेट बनाना होता है. ओके, वन सेकेंड, आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट कि यहां तक मींस कॉर्ड और कॉट की एक्सप्रेशन को लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीबडी हैविंग सम प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? प्लीज रिस्पॉन्ड. नो सर. नो सर. Very good. Now, in the question it is mentioned, assume that variable and their complement are available as input. मतलब आपको इसका लॉजिक गेट बनाना है, लेकिन आपको नॉट गेट यूज नहीं करना. ओके, इसमें नैंड गेट वाली बात नहीं लिखी है, तो हमको नैंड गेट से नहीं बनाना है, हमें इसे कॉमन गेट से बनाना है. और हमारे कॉमन गेट्स होते हैं एंड और नॉट. करेक्ट. लेकिन ये लिखा है कि assume that their variable and available as input and their complement are available as input. तो इसका मतलब है कि आपको नॉट गेट यूज नहीं करना. सो जस्ट अ मोमेंट, वन सेकेंड. तो इसका रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन का जो हम गेट बनाएंगे उसमें हमें नॉट गेट यूज नहीं करना है. नॉट गेट के लिए क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शंस. तो ए बार वी कैन डायरेक्टली पास, सी बार वी कैन डायरेक्टली पास, and after that a bar c bar is joining with the dot operator, means you have to use AND gate. Okay, AC second part I am covering. A and C is joining with the again AND gate. 1 minute. Okay, now these lines, two lines, basically plus operator is there, so we have to join these lines with the OR gate. Okay, understand? Please don't mind about my drawing. Okay, as much as I can do, I'm doing. Okay, so this is basically your question is solved. Okay, if you have any problem, please ask. No problem, we are not in hurry. Okay, तो ये आपका गेट बन गया. जस्ट अ मोमेंट, इसको मैं थोड़ा, ओके फाइन. सपोज क्वेश्चन में गिवन होता, ड्रॉ द लॉजिक गेट यूजिंग NAND गेट ओनली, assume that variable and their complement are available as input. ओके, सिर्फ एक लाइन अगर इसमें एडेड होती, वन सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट. एग्जाम्पल 1. ओके, सपोज एक लाइन अगर इसमें एडेड होती, मैं इस लाइन को ऐड कर लेता हूं. यूजिंग NAND गेट ओनली. ओके, 1 minute प्लीज. स्टार्ट कर लीजिए. यूजिंग NAND गेट ओनली. तो अब हम क्या चेंजेस करेंगे? 1 सेकेंड, 1 मिनट प्लीज. मैं एक क्वेश्चन पहले आपको सेंड कर दूं ताकि आप रिवाइज कर लें. Okay, after that we will do some changes. One minute, please. Okay, suppose अब हम क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं. Okay, using NAND gate
ओनली। आपको जो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन मिली है उसका लॉजिक गेट बनाना है, लेकिन नैंड गेट का यूज करके, और साथ ही साथ ये भी इंस्ट्रक्शन है एज्यूम दैट वेरिएबल एंड देयर कॉम्प्लीमेंट आर अवेलेबल एज इनपुट। मतलब नैंड गेट में आपको नॉट गेट के लिए कुछ नहीं करना है। ओके फाइन, जस्ट अ मोमेंट। अब ये पोर्शन हम इरेज कर रहे हैं। अब इस एक्सप्रेशन को हमें नैंड गेट से बनाना है। ओके, सो we have to pass a bar, very minor difference, you will understand, and c bar we have to pass because not gate हमें use नहीं करना है। now second thing is that we have to only use the NAND gate। तो NAND gate के लिए अब आपको इन दोनों को ज्वाइन करना होगा NAND gate से। 1 minute, so this portion is prepared। now I just want to complete this portion, then we will combine। so a C, restart कर लो, restart। And this is basically the NAND gate। इसको NAND gate आप समझ लें। Okay, now after that we have to connect with another NAND gate। Why? ये NAND gate basically किस लिए बन रहा है? ये NAND gate आपका इस प्लस के लिए बन रहा है, जो ये प्लस बीच में दिया गया है। ओके, प्लस बेसिकली और गेट से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन हमें यहां पर सिर्फ नैंड गेट ही यूज करने हैं। नाउ आफ्टर दैट यू कैन लीव, यहां पर आप छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप उस तरह से पूरा डिमॉर्गन लॉ से एक्सप्लेन करके दिखा सकते हैं, बट दैट्स अ ऑप्शनल पार्ट। वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं ए बार, जैसा अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया था स्टार्टिंग में, वैसा आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन भी लिख देते हैं, सो दैट इज सफिशिएंट। इन द आईसीएसई एंड सीबीएसई बोथ आई एम टॉकिंग, नो प्रॉब्लम, नो नीड टू एक्सप्लेन एंड प्रूव दैट पार्ट। वो तो हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए। ओके, अप टू दिस एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? प्लीज रिस्पॉन्ड। No, sir. ओके, प्लीज please confirm me, anybody having any problem? No, sir. It's clear? Okay, तो या तो क्वेश्चन में अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आपको ये चीज जरूर मेंशन होगी कि ड्रॉ द लॉजिक गेट यूजिंग द NAND गेट ओनली, assume that variable and their complement are available as input। okay, ऐसा भी मेंशन हो सकता है कि ड्रॉ द लॉजिक गेट, assume that variable and their complement are available as input, no need to take the NAND gate। okay, so दोनों ही combinations हमने कवर कर लिए हैं। okay, now it's fine। okay, now just want to discuss another question। okay, fine, but 1 minute। okay, so what about the next question? See, I'm going to discuss this question completely। तो ये क्वेश्चन है एफ ए बी सी डी और ये कुछ वैल्यूज दी हैं, तो मैं इतना पोर्शन कॉपी कर लेता हूं। ओके, और वहां पर पेस्ट करता हूं। 1 minute, just I'm taking the another fresh template। okay, this is the fresh template and I just want to change the question। 1 minute please। 1 minute। This is basically the question going to discuss। just a moment please। okay, fine।
So these are the number given in the question. Anything is just एक चीज check कर लें कुछ है. Well, that we will discuss later. Draw the logic gate. वो part अभी हम बाद में discuss करेंगे. पहले हम K-map बनाकर expression को reduce कर लें. उसके बाद फिर हम देखेंगे. Okay. So अभी हमारा focus है expression को reduce करना. Okay. 1 second please. Example 2. Okay, fine. Now again we have to plot someone. So immediately, just 1 minute. Parallelly हो सकता है आप मुझसे फास्ट कर लें, तो साइड साइड आप भी काम करते रहिए. 0 1 2 3 and 4 5 6 7 8 9 10 11. Be careful about writing this number. 12 13 14 and 15. Now look at the question please. These are the number given in the question. On this position we have to plot the one. Okay, all right. So 0, okay, then 1, okay, 2 3. This is 2, this is 3. Okay, 0 1 2 3 4 5 8 9. 4 5 8 9. 10 11 12. And 13 14. Let me cross check. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, mistake. 1 minute please. Just a moment. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 10 11. 1 minute please. Just a moment please. Two, 3 4 5 6 7. This one will be the 8, then 9, then 10, then 11, 12, 13, 14 and 15. Okay, then after that the numbers 0 1. 1 minute. So 0 1 3 0 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 and 14. Understand? 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 and 15. Okay, done. So once one we have plotted. Now we have to check what are the possibilities of octet, chord and pair. So what are the possibilities? Can you please respond? क्या बन One रहा है? octet, two quad. Okay. Sir, एक octet, दो quad. Octal chord. Okay. Please, I want the better answer.
I want the better answer, please. Okay, 1 second. You have to properly think. The observation is very important. So can we make this octet, please? Please respond. This octet can be construct. 8 Yes. 1 को एक साथ ले लेना एक octet कहलाता है. That we have done. Now, is there any more possibilities of the octet? No, sir. You must be No, knowing sir. that. You must be knowing that about the map rolling concept. Yes, sir. So these 4 ones Hmm. can make the octet with these 4 1. This is called bottom to up map rolling. Now, what about this one? How this one will be coordinate? How? So How do quad Okay. map rolling. one chord we can construct by the map rolling? Yes, sir. Understand? Now I think that you understand. अगर कॉर्ड बन रहा है तो हम पेयर्स की तरफ नहीं जाएंगे, अगर ऑक्टेट बन रहा है तो हम कॉर्ड को प्रेफरेंस नहीं देंगे. दिस इज बेसिकली द लास्ट ईयर क्वेश्चन ऑफ द आईसीएससी बोर्ड. ओके, सो doesn't matter कि ICSE or CBSE, basically we are discussing the Carnot map. That's a common point in both the boards. Okay, so fine. So immediately we have to move towards the reduction part. So 1 minute, please. Okay, reduction I will write over here. So 2 octets and 1 chord is there. So 1 minute, please. ऑक्टेट 1. ऑक्टेट 1 हम किसको एज्यूम करके चल रहे हैं, ये अभी हम आपको बताएंगे जब हम इसमें सेल्स नंबर लेंगे. तो ऑक्टेट 1 हम लेकर चल रहे हैं जो हमने बनाया था 0145. तो 0, 1, 4, 5, 12, 13, 8, 9. ओके, 1 मिनट. ऑक्टेट सबसे फास्ट रिडक्शन हमें प्रोवाइड करता है, ये बात आपको मालूम है. तो अभी हम देख लेते हैं कि इस ऑक्टेट में हमें रिड्यूस टर्म क्या मिल रहा है. वैसे तो सी बार मिल रहा है, आई हैव सीन, लेकिन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. 1 मिनट प्लीज. सो जस्ट अ मोमेंट, जस्ट लुक एट दिस पोर्शन. इस ऑक्टेट के लिए कौन कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व हैं. अगर हम साइड में देखें तो ये सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं. These are the variables involved for this octet. और अगर हम अपर पोर्शन में देखें तो ये वाले वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं. प्लीज अंडरस्टैंड. अब इस पोर्शन में हमें देखना है व्हाट आर द कॉमन. कॉमन का मतलब होता है जो चारों सेट में हो. ऐसा पॉसिबल नहीं है. ए बार इसमें है बट इन द लास्ट 2 ए बार इज नॉट प्रेजेंट. B bar is there but not in this section, so B bar is not common. B is common here but not in the first and last, so no variable is common in this section, you can see. But what about this section? In this section we are getting the C bar as a common. You can see that the C bar is here and C bar is also here, so my reduced term will be C bar. Okay, in this octet, इस octet में जो हमारा reduced term होगा वो C bar होगा. क्या इस चीज को हम एक बार और एक्सप्लेन करें या समझ में आ गई? प्लीज रिस्पॉन्ड. तो एक और बार एक्सप्लेन कर दिए. अच्छा, ये जो ऑक्टेट है, इस ऑक्टेट के साइड में ये सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं. वो सारे वेरिएबल हम कंसिडर करते हैं जो इस ऑक्टेट के अंदर इन्वॉल्व हैं. और इस पोर्शन में हमारा सी बार, डी बार और सी बार डी इन्वॉल्व है. आफ्टर मार्किंग ऑल द involved variable, we have to check what are the common variables. So a bar is common in these two but not in this, so a bar we cannot take. Similarly b bar is not present in this. Okay, so b bar I cannot take. B bar is common in this but in the last and first it is not there, so no variable is coming the common in this section. Now what about this section? C bar is common. You can see that the C bar is there and C bar is there and D bar is changing. So we can take C bar. Just a moment, please. Okay. So what about the reduced term over here?
C bar. Understand? Now we just I want to resolve the second chord. 1 minute actually. Octet 2. Octet 2 हमने किसको लिया था? Can you please write down please tell me the number? Okay. Top to bottom. So See. 0, 1, 3, 3, 2, 8, 8, 9, 9, 11, 10. 11, 10. Okay. 10. Immediately, please tell me the reduced term. If anybody having idea, 1 minute. A B bar. A B bar. हमेशा याद रखो 4 वेरिएबल में कभी भी रिड्यूस टर्म ऑक्टेट का 2 वेरिएबल में नहीं आएगा, हमेशा सिंगल वेरिएबल में आएगा. ओके, जस्ट अ मोमेंट. अभी अगर हम इस टॉप टू बॉटम, बी बार, टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें तो पहले तो हम एक बार ये देख लें कि कौन कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व हैं. ओके, बिकॉज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं. Just a moment, please. I'm just changing the color of the pointer. Okay, see. इस ऑक्टेट में अगर हम देखें तो कौन कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व हैं. एक तो भैया ये इन्वॉल्व है और एक भैया ये इन्वॉल्व है. अंडरस्टैंड? और अगर हम अपर पोर्शन की बात करें तो सारे इन्वॉल्व हैं. प्लीज अंडरस्टैंड. अब इस पोर्शन में वी आर नॉट गेटिंग एनी सिंगल वेरिएबल कॉमन. C bar is there but not here. Okay, but in this portion we are getting the B bar common. B bar and here also B bar. So B bar is the common term of second chord. Please. Okay, B bar. Understand? Now what about the chord? One chord is there ना, chord. तो chord basically हमारा बन रहा है 12, 14, 8, 10. ओके, chord को अगर हम देखें तो chord में कौन कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व हैं? जस्ट अ मोमेंट. ओके, अगर हम chord में देखें तो ये chord है हमारा, ये और ये. तो इसमें ये वेरिएबल और ये वेरिएबल इन्वॉल्व है साइड में. और अगर हम अपर पोर्शन में देखें इसी को तो ये और ये इन्वॉल्व है. मैं थोड़ा और डार्क सर्किल कर लेता हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर लें. ओके, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल हमारे कॉर्ड में इन्वॉल्व हैं. तो अगर हम इस कॉर्ड की बात करें तो साइड से ये और अपर से ये, तो इनमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है? यू कैन इजीली सी ए इज कॉमन. ए इज कॉमन. ओके, सो जस्ट अ मोमेंट, आई एम जस्ट राइटिंग ए. एंड व्हाट अबाउट दीज टू येलो मार्क्ड? इनमें कॉमन क्या मिल रहा है? डी बार इज कॉमन. सो जस्ट अ मोमेंट, डी बार. Okay. Now, finally, I want to write the reduced expression. So, इस chord में किसी को problem for taking the common? I don't think so कि होनी चाहिए. If you have, please let me know. Mishti, are you there? Mishti, are you there? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Are you getting? Yes, sir. 1 octet 2 chord, 2 octet 1 chord. Okay, 1 minute. So 2 octet 1 chord is there. So just immediately I'm going to write the reduced expression. Okay, then this is the last discussion with you all, because after the 10 minutes another class is scheduled. 1 minute please. For the practice sheet I will share the groups. I will share with the groups. 1 minute please. Actually, there are several pointers in the zoom pointers and the paintbrush pointer, so we have to select the another pointer. Just a moment. So I'm just writing the reduced expression. So C bar plus B bar plus A D bar. Okay.
Now, after that, according to the after that, according to the question, what we have to do next? Assume that variable and their complement are available as input. इसमें तो आप लोग perfect expert हैं, तो आप बना लेंगे, ठीक है? 1 minute. Somebody is asking the question. Just a moment, please. Anybody want to ask any question? Divyanshi Saxena raised the hand. Okay. So if you have any problem, please type your question and it will be immediately reached to me. Or if you want to ask any question. Okay. So आपको जो गेट बनाना है reduced expression का, उसमें आपको not get use नहीं करना है. Okay. So how you will construct? It's very simple. 1 minute, please. Okay. C bar, you can directly pass. B bar, you can directly pass. And AD bar is there. So A and D bar. And between the AD bar, you are seeing the AND gate is there. AND gate is there. And finally, you have to connect all these lines with the which gate? Which gate? OR gate. Now this is the constructed gate of the reduced expression. What I am doing, I am just 1 minute. Okay. Copying and sharing with you all. Control C and sending to the group. Okay. So this is enough for the today's lecture. And if you have any problems, so please ask me the question. Okay. Otherwise, I'm going to wind up the session. Maybe the another class I will take in a combined manner, or I will take it separately. It depends upon the topic which we are going to discuss. Next class, I will surely inform to the group. Okay. So, okay. Thank you all of you. I'm just closing the session.